Hello guys, welcome back to our channel. Here are 200 everyday English sentences with simple answers covering greetings, daily routines, feelings and common requests. Perfect for beginners to practice basic conversation and build confidence in daily interactions. Let's begin. How are you? I'm fine. Or you can say I'm good. What is your name? My name is Parul. Nice to meet you. You too. How's your day? It's going well. Can I help you? Yes, please. Or you can say no thanks. What are you doing? Just relaxing. Or you can say working on something. What's going on? Not much. Or you can say just the usual. Excuse me. Yes. What is it? I'm sorry. That's all right. Or you can say no worries. Thank you. You're welcome. Or you can say my pleasure. Where are you from? I'm from India. Do you speak English? Yes, a little. Or you can say a bit. I don't understand. Can you repeat that? What time is it? It's 9 p.m. Are you busy? A little. Or you can say not really. I wake up at 7 a.m. Okay, good start. I drink coffee in the morning. Me too. Or you can say I prefer tea. I take the bus to work. How long is your commute? I work, study all day. Sounds busy. I eat lunch around noon. What do you usually have? I go to the gym in the evening. That's healthy. I read a book before bed. Which one? I go to sleep by 11 p.m. Do you sleep well? Subscribe to our channel. I like to watch TV. What show do you like? I cook dinner myself. Yummy. I help with chores. Which ones? I go for a walk. Where do you walk? I plan my day. Smart idea. I'm trying to be healthy. That's great. I check my phone often. Who doesn't? I'm happy. That's wonderful. I'm sad. What happened? I'm tired. Get some rest. I'm bored. Let's do something fun.
I'm excited. About what? I'm angry. What's wrong? I'm hungry. I'm thirsty. Let's eat, or you can say, let's drink. I'm feeling good. Glad to hear it. I'm not feeling well. Oh no, sorry to hear that. I'm stressed. Take a break. I'm confused. Let me explain. I'm proud of you. Thank you. I'm worried. About what? I'm curious. Ask away. I'm ready. Let's go. Can you help me? Yes, of course. How was your weekend? It was good, relaxing. What are you up to? Not much, just relaxing. Can I help you? Yes, please. Excuse me. Yes, I'm sorry. That's all right. Or you can say, no worries. Thank you. You're welcome. What's going on? Nothing much. Or you can say, everything is fine. Do you speak English? Yes, a little. What are you doing? Just reading. Anything else? No, that's all. Stop kidding. I'm serious. Do you like me? No, I am just your friend. Don't worry. I'm here. Please keep quiet. Okay, sorry. How dare you? I didn't mean to. Can you repeat that? Sure, I said. What an idea. I know, right? Mind your business. Sorry, won't happen again. How are you? I'm good. You? I'm fine, thanks. What did you do today? I went to the park. It was nice. Cool. I stayed home. I watched a movie. What movie? A comedy? It was funny. Nice. See you soon. Yes, bye. Prabhat. Good morning. आपका दिन अच्छा हो श्रीमान. Good day to you, sir.
उनकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। He is still not well. बहुत बढ़िया, ऐसे ही जारी रखो। Well done, keep it up. मैं बाद में फ़ोन करूँगा। I will call you later. मैं जल्द ही तुमसे मिलूँगा। I will catch you soon. कृपया मुझे अपना हाथ दीजिए। Please give me your hand. मेरी आँखों से दूर हो जाओ। Get out of my sight. कुछ समझा नहीं। I did not understand. आपका क्या मतलब है? What do you mean? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? What are you talking about? क्या आप मेरे सामान से दूर रह सकते हैं? Could you stay away from my stuff? मुझे खेद है। I am sorry. मुझे आज थकान महसूस हो रही है। I am feeling tired today. इससे आपका कोई मतलब नहीं। It's none of your business. मुझे नहीं पता। I don't know. हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। We both like each other. जल्दी आओ। Come quickly. बाद में बात करते हैं। Talk to you later. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much. आपकी समस्या क्या है? What is your problem? क्या मैं आपसे कोई बात पूछूं? Can I ask you something? आपसे मिलकर अच्छा लगा। It was nice meeting you. आप कैसे हैं? How are you? क्या हो रहा है? What is going on? आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद है? What are your likes and dislikes? असुविधा के लिए खेद है। Sorry for the inconvenience. मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? What can I do for you? क्या आप कृपया इसमें मेरी मदद करेंगे? Will you please help me with this? यह कोई मजाक नहीं है। This is not a joke. मजाक करना बंद करो। Stop kidding. यहाँ क्या हो रहा है? What is happening here? और सब ठीक है ना? Everything is fine. क्या आपको मेरी बात समझ में आई? Did you get my point? आप मुझसे क्या चाहते हैं? What do you want from me? आपकी आयु कितनी है? How old are you?
आपका कार्यालय कहाँ है? वेयर इज योर ऑफिस? स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ। गेट रेडी टू गो टू स्कूल। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। क्या आप हमारे साथ जुड़ेंगे? आर यू ज्वाइनिंग अस? मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आई एम वेरी प्लीज टू मीट यू। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह उचित नहीं है। दिस इज नॉट फेयर। तुम आज क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग टुडे? कृपया कुछ कहें। प्लीज से समथिंग। मैं फिर आ जाऊंगा। आई विल कम अगेन। आप क्या रखना चाहेंगे? वॉट वुड यू लाइक टू हैव? हमें आमंत्रित करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। यह मेरा सौभाग्य है। इट्स माई प्लेजर। सलाह के लिए आभार। थैंक यू फॉर द एडवाइस। इस दिन की बहुत बहुत बधाई। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जन्मदिन की शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। मैं आपको सुखी वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं देता हूँ। आई विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। कृपया बैठ जाएं। प्लीज बी सीटेड। क्या सब ठीक है? इज एवरीथिंग ऑल राइट? आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू। कब पहुँचोगे? व्हेन विल यू रीच? मैं अपने रास्ते पर हूँ। आई एम ऑन माई वे। अगली बार आपसे मिलने की उम्मीद है। होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम। क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? आपको स्कूल जाने में देर हो रही है। यू आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल। मेरी स्कूल बस छूट गई। आई मिस्ड माई स्कूल बस। आपके कक्षा शिक्षक कौन है? हु इज योर क्लास टीचर? कृपया बोर्ड को साफ करें। प्लीज क्लीन द बोर्ड। वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। रीड द sentences केयरफुली। आपका पसंदीदा विषय क्या है? What is your favorite subject? आपका पसंदीदा शिक्षक कौन है? Who is your favorite teacher? मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। I have completed my homework.